Hello everyone, myself Garvit Sharma, student of EB32. Today I will explain you about DFA. So what is DFA? First of all we will know that what is DFA. DFA defines that deterministic finite automata is a finite state machine that accepts or rejects a string. So I will be telling you, we will be starting with a question. How it strings accept that? Let's understand with a question now. So here's a question in which we have to construct a DFA which accept all the sets of string over AB with start with these have 5 parts. So one by one we will doing all the parts. In this part that the string is starting with A. So इसमें कैसे लैंग्वेज क्या क्या बन जाएगी ए से स्ट्रिंग जो स्टार्ट हो रही है उसके लिए ए भी बन सकता है ए भी हो सकता है ए बी भी हो सकता है और ट्रिपल ए भी हो सकता है एंड सो ऑन. सो सबसे पहले अगर अपन इसमें चेक करें कि स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी है तो इसमें स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ए है एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी हुई तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इससे एक 1 हुई. ओके. नंबर ऑफ स्टेट रिक्वायर्ड. सो मतलब जितनी लेंथ होती है उससे एक ज्यादा ही नंबर ऑफ स्टेट्स होती है. सो 1 + 1 दैट विल बी 2. So in every DFA there is one dead state. So we will also add one for the dead state. So one for length of string, one for state, and one for dead. So it will be having 3 number of DFAs. So अब अपन ने पता कर लिया कितने DFA होंगे. Now we will know how to construct the DFAs. Uh, okay. Now we will make an initial state. First of all, we will make an initial state that is Q naught. Secondly, we will give a transaction A on Q naught, then we reach to Q1, means A is accepted. In this, the A element that we have given transaction on Q naught, that is accepted by Q1. Now, further we will checking for B, that we will sending the transaction to Q2. Here the dead state will come. Now we have a given transaction of A to Q naught. Now we will have a B that does not will accept, or definitely it will not, because we only want a transaction we create q2 and that will be dead state. Now further we will be checking for this. We have given a self loop to q1 because any number of ab can come on q1. For example, a triple a, all strings start from a will reach to final state while b will take us to dead state. So what is DFA? DFA represents a set of 5 tuples. What are the 5 tuples? That is Q. Q are the set of states. Epsilon. Epsilon is the input symbol. Delta, Q naught, and F, that is final state. Now we will be seeing the table how to do this. So initially we have given two inputs, that is A and B. Q naught is the final state and F is Q. So transition function we have defined. अगर अपन Q naught के लिए देखेंगे और A इनपुट दिया है तो इसमें एक Q1 उसने आउटपुट दिया है. इफ वी चेक फॉर Q naught एंड इनपुट इज गिवन फॉर B तो Q2 आउटपुट आया है. ऐसे सिमिलरली Q1 के लिए अगर अपन चेक करेंगे A इनपुट पे तो Q1 ही आएगा और Q1 के लिए चेक करेंगे B इनपुट पे तो Q1 ही आएगा. Now we will head towards the next question, that is द स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए बी. अगर स्ट्रिंग ए बी से स्टार्ट हो रही है, सबसे पहले अपन लैंग्वेज क्रिएट करेंगे उसकी. तो लैंग्वेज कैसे क्रिएट होगी? दैट इज ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, मीन्स ए बी से स्टार्ट होना चाहिए और कुछ भी हो सकता है. ओके. नाउ वी विल मेक द DFA, कंस्ट्रक्ट अ DFA.
तो बेसिकली कितने लेंथ की स्ट्रिंग है, दो लेंथ की स्ट्रिंग है। स्टेट्स कैसे निकालते हैं, जितनी लेंथ की स्ट्रिंग होती है उसमें वन ऐड करके। तो 3 नंबर ऑफ स्टेट आ जाएगी इसकी। डेड स्टेट एक सब में मान के चलते हैं अपन, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट बेसिकली 4 हो जाएगी। देन क्यू नॉट से अपन Q1 पे ट्रांजेक्शन करेंगे ए का, तो पास हो जाएगा। फिर Q1 पे बी का ट्रांजेक्शन करेंगे Q2 पे। तो अब अपन को फाइनल स्टेट तक आ चुका है, ए बी फाइनल स्टेट रीच कर चुका है। फिर यहाँ पे अपन सेल्फ लूप लगा देंगे, जिससे ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। अब क्यू नॉट पे चेक करेंगे बी ट्रांजेक्शन भेज के Q3 पे, कि वो भी चलता है क्या। तो क्यू नॉट से जब अपन बी ट्रांजेक्शन जब अपन क्यू नॉट से करेंगे, तो वो डेड स्टेट हो जाएगा, क्योंकि ए बी ए जो है पॉसिबल नहीं है ये केस। तो इसलिए ये डेड स्टेट हो जाएगा। Q1 से अपन करेंगे, फॉर क्यू वन से अगर अपन बी ए करेंगे तो बी ए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वी हैव टू स्टार्ट विद ए बी। सो Q1 भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बनेगा ये सेकंड क्वेश्चन का जो डीएफए बनेगा। नाउ इफ द स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए बी ए, अगर स्ट्रिंग ए बी ए से स्टार्ट हो रही हो तो कैसे डीएफए को कंस्ट्रक्ट करेंगे। वैसे ही पहले जैसे था कि सबसे पहले लैंग्वेज लेंगे, दैट इज ए बी ए बी बी एंड सो ऑन। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, 3 है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और टोटल नंबर ऑफ स्टेट निकालेंगे, एक तो उसकी वो आ जाएगी और एक डीएफए डेड स्टेट वाली। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग 5 हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग 5 हो जाएगी। नाउ वी विल चेक, क्यू नॉट से अपन ए का ट्रांजेक्शन करेंगे, वो पास हो जाएगा। फिर Q1 पे बी का ट्रांजेक्शन करेंगे, वो भी पास हो जाएगा। और क्यू नॉट पे अपन ए का ट्रांजेक्शन करेंगे, वो भी पास हो जाएगा। एंड एट Q3 वी विल रीच टू फाइनल स्टेट। एंड एट फाइनल स्टेट हमेशा सेल्फ लूप बनाएगा। ओके, बेसिकली देर इज अ लाइन दैट ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ए will reach to final state and all while b take us to dead state। मतलब ए से जितनी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही होगी वो फाइनल स्टेट तक रीच करेगी, और बी जो होगा वो अपन को डेड स्टेट पे लेके जाएगा। तो देन क्यू नॉट पे अपन बी के लिए जब चेक करने के लिए जाएंगे, तो वो डेड स्टेट में चले जाएगा, क्योंकि ए बी बी दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर क्यू नॉट। एंड फॉर क्यू वन फॉर Q1 वी आर चेकिंग दैट वी हैव पास्ड ऑलरेडी B। तो B A B तो पॉसिबल है नहीं, तो वो भी डेड स्टेट पे चले जाएगा Q नॉट के लिए। एंड इफ वी चेक फॉर Q2, अगेन Q2 पे A B B आ जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है Q2 के लिए। और Q3 तो अपना सेल्फ लूप बना ही चुका है, तो Q3 नहीं एग्जीक्यूट होगा। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इट्स फोर्थ पार्ट। अगर स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है विद बी ए बी, if the string is starting from BAB, we are checking for this. Now, same procedure what we have did in the last sub parts. First of all, we have created the languages. Then we have checked the number of states. So how many number of state it will have? Basically 3 plus 1 plus 1. 5 number of states it will have. Similarly, like last part, we will pass on Q naught. We will pass first, it's starting with B, so we will pass B. And on Q1 we will pass A, because we have to follow this pattern of BAB. That's why we have passing alag-alag parameters on different queues. Similarly, Q0 and Q3 पे वो अपने आप सेल्फ लूप बना लेगा। फिर Q0 पे अपन A को भेजेंगे, डेड स्टेट रीच कर जाएगा। Q1 पे अपन B को भेजेंगे, डेड स्टेट रीच कर जाएगा। एंड Q3 को अपन A एलिमेंट को ट्रांजेक्शन जब A एलिमेंट का कराएंगे Q2 पे, वो भी डेड स्टेट रीच कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? बिकॉज BAA इज नॉट पॉसिबल, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट BBA। okay, and last part of this question, that is if the string will start with
if the string will start with AA. अगर string AA से start हो रही है, if the string will start with AA, so what is the language? First we will create the language, that is double A, AAB, AAA, AA double B. Same, how to construct a DFS? Same, first of all we will create the number of states. What is number of states? Length, what is length in it? 2 plus what is number of states, that is 1, and plus 1, that is 4 number of 4 DFAs will be created in this quest, in this part. First we will send a transaction to Q1, it will get passed, then we will a transaction to Q2, both will pass, and at the end, after reaching the final state, it will definitely make self loop. The basic funda is when the element reaches to the final state, they will make self loop. Now we will check for Q0 on Q3 to make the transition. So it will be it will reach to dead state because AB is not possible. We will check for Q0 for B, that will also not possible because it will reach to dead state. And for Q0 we will not check because Q0 has already reached to the final state. So we have discussed all the parts and all the problems. I hope you understood. Thank you.